A very good morning to all my students of केंद्रीय विद्यालय लोकरा. आई होप आप अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रह रहे होंगे और अपने फिज़िकल फिटनेस और हेल्थ पर ध्यान दे रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे. तो जैसे क्लास 11th के जो अभी हमारे बच्चे आने वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन उनको लेना है अबाउट द स्ट्रीम सिलेक्शन. तो आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रीम सिलेक्शन के बारे में. आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन हेल्प करे आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करने में. So I welcome you all to the presentation of today's, in which we will talk about the stream selection after the class 10th. So basically it comes under the Tarunotsav flagship program that is started by the Kendriya Vidyalaya Sangathan in the year 2017. Here we will talk about the stream selection after your class 10. So basically what is Tarunotsava? So Tarunotsava is a flagship program by the Kendriya Vidyalaya Sangathan. It was started in 2017. In this we have various activities for the students for the gap that they have after their board exams, basically for 2 months, in which we counsel the students about their stream selections, guidance about their careers. In this we improve the language skills of the students both in Hindi and English, various sports activities, yoga, etc. So now we'll talk about the stream selection after the class 10th. So basic criteria for stream selection is your interest towards the subject. अगर आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, go for it. Next comes your self assessment. क्योंकि आपको आपसे अच्छे से कोई और नहीं जानता. सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, whether you will be able to study that subject or not. Next comes guidance from your teachers and parents. Next, career option, passion and marks. So here in Kendriya Vidyalaya Lokra, we have all the 3 streams available for you all: arts, commerce, science. In science we have both the branches, medical and non-medical, that you can select. मेरा sole criteria to choose science was just that I like a biology subject. Now we will see the subjects that are offered in humanities. We have Hindi, English, geography, history, economics, health and physical education. Here I have written only a few of the career opportunities that you can go in humanities, like Bachelors of Arts, Higher Studies, Bachelors of Journalism and Mass Communication, Hotel Management, Fashion Designing, Bachelors of Physical Education, Bachelors of Education, Law and many more. Now we'll see about the commerce, what are the subjects that are offered. Here we have accountancy, business studies, economics, English. You can choose either of them, math, Hindi, information practices, only one of them. In commerce, then physical and health education. The career opportunities, some of them are noted here, like Bachelors of Commerce, Chartered Accountant, Company Secretary, Bachelors of Administrations, Law and many more. Now we'll discuss about whether to go for medical or non-medical. In medical we have biology, either choose Hindi or English, physics, chemistry, English, physical and health education. Few career opportunities: MBBS, dental surgery, Bachelors of Science, Bachelors of Pharmacy, nursing, Bachelors of Physiotherapy, B.Ed, that is Bachelors in Education, and many more. Now we'll talk about non-medical. In non-medical, the subjects offered are physics, chemistry, maths, computer science, English, physical and health education. Career opportunities: Bachelors in Technology, Bachelors of Architecture, BSc, Bachelors in Education, Research, and many more. In all of them, like if we say medical or non-medical, we have so many career opportunities that you can go for. Research in higher education also. चलिए अब हम बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की. बाकी जितने भी मैंने बच्चों से बात किया और जितने भी अपने फ्रेंड सर्कल में बात किया, तो सबका अपना अपना रीज़न था टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर स्ट्रीम इन क्लास 11, एंड मोस्ट ऑफ देम वर श्योर व्हाट सब्जेक्ट दे वांट टू रीड फॉर फर्दर स्टडीज़.
So it is very important to have a self-assessment towards the subject that you like, and a proper guidance from teachers and parents. It is utmost important. So please have a proper guidance, have a proper discussion with your parents, with your seniors while selecting the stream. Now I'll mostly talk about what you don't have to do. Like first thing, do not follow anyone blindfoldedly. Like आंखें मूंद कर प्लीज़ किसी को भी मत फॉलो कीजिए, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, सीनियर हो या आपके कोई रिलेटिव हो. और अपने आप को प्लीज़ मार्क्स के बेसिस पे तो बिल्कुल भी मत जज कीजिएगा कि येस 10th में मेरे 90% आ गए तो आई कैन गो फॉर साइंस और आई कैन गो फॉर दिस सब्जेक्ट. अच्छे से इवैल्यूएट कीजिए. पीयर प्रेशर पे तो बिल्कुल भी मत आइएगा कि क्लास 11th में स्ट्रीम सिलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है लाइफ का आपके लिए. आई होप आप उसको अच्छे से डिसीजन लेंगे. आई होप आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी और आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिले इससे जब आप अपना सब्जेक्ट चूज़ करें. एवरीबडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल एंड सबके लिए सक्सेसफुल बनने के लिए हर किसी के लिए अलग अलग पाथ हो सकता है. पाथ इन द सेंस स्ट्रीम आपके लिए सबके लिए अलग हो सकते हैं. कोई कॉमर्स लेके पाथ सक्सेसफुल हो सकता है, कोई साइंस लेके, कोई आर्ट्स लेके. हम सबके पास पोटेंशियल है. एवरीबडी कैन फ्लाई एंड वी विल फ्लाई. ऑल द बेस्ट.